Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to discuss the another group of the exercises of the chapter Skin class 9, right? First, define the few terms. Denaturation. When we ask denaturation, see, denaturation means inactivation of enzymes by changing the tertiary shape of enzyme molecule due to high temperature. I hope it is clear. Inactivation of enzymes by changing the tertiary shape of enzyme molecule due to high temperature. Next is your corium. What is corium? Corium, a connective tissue derivative of mesoderm. What is corium? A connective tissue derivative of mesoderm. Corium, a connective tissue derivative of mesoderm, right? Heart stroke. What is heart stroke? Rise in the body temperature in hot, humid summers during which loss of heat from the body is reduced due to decrease in sweating and radiations, right? Blackheads. What do you mean by the blackheads? See, blackheads enlargement of sebaceous glands because of the accumulation of sebum. When sebum is accumulated in the cavity where the from the pores from where the sebum comes out, enlargement of the gas and the sebaceous glands enlarges in their size. Then the accumulation of the sebum that changes into blackheads that we see in our faces and the other parts of the body too. What is acne? Acne, inflammation of sebaceous gland, usually at puberty. Puberty, when the sexual reproductive characters starts developing, or they are at the age of the developing age in your adolescence stage, the inflammation means swelling of sebaceous glands usually occurs at puberty. Leukoderma, what is leukoderma? Leukoderma, a disease of unknown reason causing loss of pigmentation in the patches of skin of various sizes. Now differentiate. Under differentiate, see, the first one, differentiate albinism, leukoderma. Albinism, it is complete absence of pigments from the skin, hair, etc. And the skin and hairs are purely white, means total lack of pigmentation. In leukoderma, is a unknown. Here, this disease, though unknown reason, it causes pigmentation in the form of patches of the skin of various sizes. You have seen the patches are formed in the skin, but though does not have any effect, neither it is contagious disease or the means the contaminated disease, or it can spread communicable disease spread, but these patches appear. Exact identification मतलब इस रोग का properly कारण क्या है ये हम लोग अभी तक नहीं पता कर पाए. Next, heart stroke and heat cramp. As you already know, heart stroke, rise in body temperature in hot humid summers during which loss of heat from the body is reduced due to decrease in sweating and radiations. Whereas heart cramps, painful contraction of muscles due to excessive loss of water and salts in sweating that results in heart cramp. Sweat and sebum. Sebum is secreted by the sebaceous gland. It is an oily secretion. It lubricates the hair oil and it is a waterproof. It prevents the skin from drying. As you see, if you put the water on the skin, then what immediately the water comes out cyst of. That is due to the waterproofing and the formation of the this oily layer in your skin. Sweat glands means they secrete the sweat. Sweat, it is the water, mineral salts and the small amount of urea. Evaporation of sweat causes cooling. से जब पसीना निकलता है तो आपको ठंडक महसूस होती है. And they help in the process of excretion, means with the help of the sweat, water, salts, minerals and the small amount of ammonia is given out of your body, and they help in the process of excretion as well as regulation of your body temperature. Vasoconstriction and vasodilation. See, vasoconstriction means constriction of blood vessels, decreasing the blood supply, and vasodilation means dilation of blood vessels, increasing blood supply.
stratum basale and stratum corneum. See, stratum corneum, it is the outermost layer of the skin, and stratum basale, also known as stratum zermatimia, it is the innermost layer of the skin. It is the outermost layer. This outer layer, it is dead keratinized cells, constitutes the stratum corneum. It is waterproof and germ-proof. Through this, water is not able to enter inside your body, because if your body starts absorbing water, your weight will goes on increasing, and that will affect your all physiological activities of the body. So water should not be as a waterproof and germ-proof. Germs are also means as a barrier for the protection of the body. Whereas stratum basal or stratum zermatimum, it is the innermost layer made up of cuboidal or columnar cells. It rests on the basement membrane, that is epidermis and dermis. Upper part is epidermis, lower part is dermis. Through the dermis, it is the secretion occur, and these cells, they divide actively. These cells, actually what happens, the layer goes on dividing. As it goes on dividing, the upper cells are replacing. When they absorb, they get it flattened. Slowly and gradually, the nucleus disintegrates, and they come to the above layer, forming the stratum corneum and dead and layer cell. When again the new cell, the uppermost layer is discarded off and it is removed. Right? Okay. Now just see here. Comment. Skin is the master organ of the body. Yes, skin is the master organ of the body. It is the largest gland of the largest organ of the body, because it provides and maintains the shape of the body and protects all internal delicate vital organs. Why it is considered as master organ? It maintains the shape of the body and protects all the internal delicate vital organs of the body. Skin is the best thermoregulatory organ of the body. When we ask skin is the thermoregulatory organ of the body, means regulation of temperature. Now see, in the one of the most important function of the skin is regulation of body temperature. When it maintains the normal temperature, see, during summers, blood supply to the skin increases, vasodilation occurs, and more sweat is produced. So skin provides heat for the evaporation of sweat. जितना ज्यादा आपका पसीना निकलता है, लॉस ऑफ हीट होती है, शरीर ठंडा पड़ता है, and it loss of heat and causes the. इसके opposite, during winter what happens, subcutaneous layer and the hair acts as an insulating and prevent the loss of. इसमें heat को body में restore करते हैं. Blood supply to the skin is reduced and blood vessels constrict so as to reduce the loss. During the winter, the subcutaneous layer and the hair that acts as an insulating material, and as an insulation, the heat from the inner side is not supposed to be moved towards the outer side. The heat is not produced and it is restrained in the body. Vessels constrict. जब vessels constrict होंगे तो heat देते हैं, और summers में vessels dilate कर, that is vasoconstriction and vasodilation occurs in our body. So shivering is that generates the heat, that is due to the mechanical process. Explain how skin is the same answer. Describe the structure of the nail. When you ask the structure of the nail, you see nails are formed by the epidermis present at the tips of all fingers and toe. At the tip of all, this is the tip of the finger. Now here see, this is the nail. So they are very hard, स्लाइटली आर्च्ड प्लेट. ये देखिए हल्का आर्क होता है इसमें, ये होते हैं, ये नेल्स हैं आपके. इट इज स्लाइटली आर्क बेस्ड, स्लाइटली न्यूक्लिएटेड. ईच नेल कंसिस्ट ऑफ कैराटिन प्लेट्स. इसमें कैराटिन प्लेट्स होती हैं. ये देखिए नेल है, ये आपका उंगली है, इसके ऊपर ये नेल है. अपर लार्ज कैराटिन प्लेट्स, अपर लार्ज अंगुस, ये ऊपर लार्ज जो आपको दिखाई देता है नाखून ऊपर से, दिस इज एंगुस, एंड द लोअर वेरी स्मॉल, इट इज सब एंगुस. और इसके ये ऊपरी एंगुश है जो ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे नेल. तो ये तो हो गया अंगुश, और जो नीचे छोटा सा पार्ट है ये है सब एंगुस. एंड बिलो द एंगुश दिस रिच, उसके बाद ये रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स. दीज ब्लड वेसल्स, ब्लड है दैट इम्पार्ट्स पिंक कलर. ये ब्लड वेसल्स इसके बिल्कुल इसके नीचे जो ब्लड वेसल्स सप्लाई करते हैं, ये इसी जो ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, इसी को नेल बेड. ये इंग्विश हो गया. जो पिंक कलर है ये सब अंग्विश हो गया.
ये है आपका नेल बेड, एंड एट द बेस ऑफ द नेल बेड यानी कि ये बेस है, यहाँ से ये फॉर्म होता है, ये नेल बेड, इसको नेल रूट कहते हैं। इट इज फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन मतलब अंदर धस के, ये उंगली है, आप ये देखिए इसके अंदर ये धसा हुआ है, ये आपका स्किन है, इसके अंदर से ये नेल निकल रहा है, जैसे ये देखिए आपको दिखाया गया है, यह नेल रूट, इट इज फाउंड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि ये थोड़ा सा एपिडर्मिस अंदर की तरफ जाती है, इन्वेजिनेट करती है, दैट प्रोवाइड्स कैरेटिन फॉर द, यहाँ से जो है ये अंदर से स्लो होकर के कैरेटिन, जिससे कि ये नेल ग्रो करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर tip of the finger that you can see it very well clearly here, right? Now write a short note on sebaceous and pseudoreferous gland. The short notes on the sebaceous and pseudoreferous gland. See, sebaceous glands, they secrete sebum. Sebaceous gland, they are the lobulated glands, many sacs that open into the hair follicle by a common duct. Oil glands, they formed by outpushing of the hair follicle. Glandular epithelium of these glands secretes oil. See, sebaceous gland, they secrete sebum. It lubricates the hair and makes it oily and waterproof, and it prevents the skin from drying. Only this much you are supposed to remember. Glandular epithelium of these glands secretes an oily secretion called sebum. It lubricates the hair, make it oily and waterproof, and it also prevents the skin from drying. Lobulated glands sac present in the hair follicle by a common duct, oil gland. उसी oil gland से आपके sebum भी निकल, sweat भी निकलता है. Sweat glands, they are also highly coiled gland. See, you can see here this diagram. This is your sweat gland, sebaceous gland है ये आपकी, ये ग्लैंड है, ये आपके स्वेट, ये यहाँ से करके ये स्वेट पोर जो होता है, और जो हेयर फॉलिकल होता है यहाँ पर सब पीछे, यहाँ पर ये सीबेशियस ग्लैंड, ये हेयर फॉलिकल निकलता है, तो ये साइड में सीवेज है, यहाँ तो हेयर फॉलिकल है, शाफ्ट ऑफ हेयर है, ये रूट है जो कि आपके डर्मिस लेयर में है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये जितना येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कनेक्टिव टिश्यूज का है, डर्मिस है, फैटी लेयर है, ये नीचे फैट ग्लोब्यूल्स एयर है जो पैपिला है प्यूलेसिया, उसके अंदर ये आपका एपिडर्मल एयर है, ये आपकी लेयर्स ऑफ स्किन है जो कि बॉडी में जगह, जैसे यहाँ पर आप फार्म में देखिए आपकी स्किन मोटी है, यहाँ मोटी है तो ये लेयर्स इतनी थिकनिंग की होंगी, जहाँ स्किन पतली होती है वहां पर इसकी थिकनेस जो ये जो 3-4 लेयर्स हैं, ये 3-4 लेयर्स रिड्यूस होकर एक लेयर में चली जाती, जैसे ऊपर की स्किन देखिए आपकी पतली है, यहाँ पर पतली है, यहाँ पर स्किन आपकी मोटी है, इट इज द थिकेस्ट वन। तो ये देखिए ये सीबेशियस जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये हाईली कॉइल्ड ग्लैंड्स होती हैं जो कि सीबम सिक्रीट करती हैं और ग्लैंड से, और जो ये सीबेशियस ग्लैंड होती हैं ऑयल सिक्रेशन ये हेयर फॉलिकल के साइड में प्रेजेंट होती है, ये सीबेशियस ग्लैंड है और इनका ट्रैक्ट खुलता है ये हेयर फॉलिकल के लिए, यहाँ से यहाँ पर ये जो हेयर पैपिला होता है, जो हेयर जस्ट यहाँ से आपका सीबम सिक्रीट होता है, यहाँ पर आपका स्वेट सिक्रीट होता है जो बॉडी में पोर्स होते हैं, तो ये स्वेट पोर्स दे पासेस द स्वेट पोर्स, ईच स्वेट ग्लैंड इज सराउंडेड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दे सीक्रेट स्वेट अंडर द कंडीशंस, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट। स्वेट में क्या होता है, पसीने में वाटर होते हैं, मिनरल नॉर्मली सोडियम क्लोराइड होता है, इसीलिए पसीना अगर आप चख के देखिए तो ये आपको नमकीन लगता है, and small amount of urea. Evaporation of sweat causes cooling effect, so sweat glands helps in the process of excretion and also regulates your body टेम्परेचर। सीबेशियस ग्लैंड ये आपकी सीबेशियस ग्लैंड है जो कि हेयर फॉलिकल के पास होती है, ये आपकी स्वेट ग्लैंड्स हैं जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसमें बड़े सीबेशियस ग्लैंड, सेब ग्लैंड, यही मेन दो ग्लैंड्स होती हैं जो इसमें आपके बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और जो मेमोरी मिल्क ग्लैंड्स तो ये तो आपके चेस्ट में होंगी, ठीक है। अब ये राइट शॉर्ट नोट्स हो गए, वेरियस लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, देखिए लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस व्हेन यू आस्क इट, under the various layers of epidermis skin they have the four layers, stratum basal and stratum spinosum. Some scientists they have derived these two layers as a single layer known as stratum malpighi। इसमें जो बेसमेंट आपका स्किन जो आपका ये डायग्राम है, ये इसमें जो आपकी ये जो सबसे नियरेस्ट क्यूबॉइडल लेयर है, ये लेयर है आपकी स्ट्रेटम बेसल,
ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती है, डिवाइड होकर के ये सेल्स ऊपर की तरफ जाते हैं स्ट्रेटम, तब ये जो होता है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम फॉर्म करता है। स्ट्रेटम बेसल और स्ट्रेटम स्पाइनोसम ये दोनों एक ही चीज है। कुछ बुक्स में इसको मिला करके सिर्फ स्ट्रेटम बेसल स्ट्रेटम स्पाइनोसम नहीं, बल्कि सिर्फ स्ट्रेटम मेलविगाई किया गया है। स्ट्रेटम इस दोनों को, ये ग्रैनुलोसम, इनको मिलाकर स्ट्रेटम मेलपीगाई कहते हैं, मेलपीगाई डबल आई। कलेक्टिवली दे सेल्स होती हैं जो कि सिर्फ डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद ऊपर आया है सेंट्रल ल्यूसिडियम। इसमें क्या होता है, जैसे ही जैसे ऊपर जाती हैं सेल एनलार्ज होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। सेल्स बिकम्स एनलार्ज, फ्लैटेंड, स्लोली एंड ग्रेजुअली न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स। साइटोप्लाज्म से कंटेन रिफ्रैक्टाइल सब्सटेंस, मतलब साइटोप्लाज्म धीरे धीरे डेड होने लगता है, उसको एलिडिन, इट इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है कैरोटोहाइलिन टू कैरेटिन, वो चेंज होता है। फिर यही जो बाद में जाके ये कैरोटीन इन कैरेटिनाइजेशन होता है स्ट्रेटम अंदर के लिए, स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो ये अपर जो स्किन हमको दिखाई दे रही है ऊपर, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है। ये देखिए अपर बाहर की तरफ जो है ये स्ट्रेटम, तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, outer layer of dead keratinized cells constitutes stratum corneum. It is waterproof, germ-proof. And during our lifetime, we shedded out 23 kg of them. So skin के basically 3 layers होते हैं, stratum malpighi, stratum lucidium and stratum corneum. Stratum corneum हमारी outer most layer है, lucidium जो middle layer है, यहाँ पर जो lower most layer stratum malpighi cells ये हैं, जो बेसल आपका रिप्रोड्यूस किए, बेसल एंड स्पाइनोसम, वो एक ही होते हैं और इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेटम मेलपीगाई। ये डिवाइड होते हैं, डिवाइड होकर के ये फ्लैटेंड होते हैं, स्ट्रेटेंड होते हैं, साइटोप्लाज्म स्क्लेराइज होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वही सबस्टेंस रिफ्रैक्टाइल जो कि न टूटने वाले एलिडिन में चेंज होता है, और यही एलिडिन जो होता है कैरोहाइलिन और फिर बाद में कैरेटिन में चेंज होता है। और ये कैरेटिन हॉर्न जिसके बने, कैरेटिन जो कड़ी चीज जो नाखून में स्टिफनेस आती है, आपकी स्किन में जो इलास्टिसिटी होती है, थिक डेसे, ऊपर जाकर के यहीं पर स्ट्रेटम कॉर्नियम, वाटरफ्रूट, जर्म फ्रूट लेयर होती है, और उसके बाद जैसे ही नीचे की लेयर उसमें आते हैं, ऊपर की लेयर डिस्कार्ड ऑफ सेल। आप देखिए कभी भी चोट लगती है, फल होते हैं, अगर नहीं भी होगी तो भी, क्योंकि हमको पता है 28 दिन में हमारी लेयर पूरी चेंज हो जाती है। आफ्टर 28 days the layer is continuously going to be changed. Okay, now just let us look over further. See, they give the name of the layer in the cells in which aladin is present, that is stratum lucidium. What is the function of subcutaneous tissue? The subcutaneous tissue function acts as an insulation and prevents loss of heat. Secretion of the ceruminous gland, it is the earwax or erumin. Epidermis is stratified epithelium. Innermost layer of epidermis is stratum basal. Cells of stratum rest upon basement membrane. Mesodermal in origin, that is the corium layer. It is not this, it is corium, C-O-R-I-U-M. That the corium is a mesodermal in origin. Sebaceous glands opens into the hair follicle. Nail develops from the epidermis of the skin. Melanin prevents us from ultraviolet rays. It is sensitized by the skin in the sunlight. It is also melanin. Epidermis and dermis are held together by ridges and grooves that fit into each other. Man sheds about 23 kg of skin during his lifetime. In a man, normal height, the area of skin is about 2.7 square kilometers. Subcutaneous layer of the cells are full of adipose tissue. Now, one important function, say stratum basal, that is the base skin layer, it goes on dividing. Sebaceous gland, they secrete sebum. Nails, they are the outer derivative of the skin. Hair, that the hair present, as you know already, the hair follicle, the hairs, they help in regulating your body temperature. They help in regulating it. Meibomian glands, they secrete an oily secretion that keeps them oily, soft and flexible. Sebaceous gland and margin of the eyelids and eyelashes. Eyelids or eyelashes means the, and ceruminous gland, they lubricates and protects your eardrum. I hope is clear. ये एपिडर्मिस सेल्स को डिवाइड करती हैं, ये सीबम सीक्रेट करती है, नेल एपिडर्मिस ये आउटग्रोथ है,
that helps protects the edges of, ये fingers की edges को protect करता है. Here it helps in the regulation of the body temperature. Mammalian glands ये आपके genital hairs में ये present in the eyelids of the hair follicles and eyelashes. Modified से basic होते हैं, oily secretion keep them oily, flexible and frictionless. Ceruminous gland, they lubricates and protects your eardrum, right? Okay. Now here just you say, of which tissues dermis is composed of? It is composed of connective tissue. What is the role of electrophyll? It brings movement in the hair. Which hormone helps to bring the hair in an end position? It is adrenaline hormone. Name the cell that produce melanin and where these cells? Melanocytes present beneath the epidermal cells. They produce melanin. From whereas mammary glands, they are modified sweat gland. What is the function of Pacinian corpuscles? It is sensory hairs that sensitive to pressure. Layers of skin, as you know already, the diagram is here. Name various derivatives. Derivatives are hair glands and nail. Name the parts labeled. See, epidermis, dermis, sweat gland. See, they are the sweat glands. Subcutaneous fat layer is there. This is your epidermis region. This is your dermis region. Name the parts you have done. One main function of the each parts. That the second one, hair follicle. Here the sweat glands are produces person. They produce the sweats. Number 3, sweat glands. They produce the sweats that consist of the water, a small amount of the urea, and whereas the salts, NaCl is present over there. And the fourth one, that is the fatty layer, it acts as an insulating material. It prevents the heat, insulating material in our body. And it would the hair found on the skin of the mammal, they help the sensory of found in the skin, that the sense of touch, heat, humidity, pressure, pain, etc. They all get it. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video. Thank you.